Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I am Nitika. Let's check the pulse of a stock market. Today I have got the stock which is personally my favorite. I will analyze the Q4 result and it has posted a very good Q4 results, and then I will discuss the fundamental, and the end of the video I will discuss the buying level and technical level. So to know the buying level of this stock, stay connected till then and smash the like button now. So first, let me disclose the name of the stock, and then I will discuss little bit about the company and then Q4 results. So this company is Polycab. Yes, Polycab India is today's stock, and this is a actually manufacturer and seller of wires and cables and fast moving electric good, means FMEG. जैसे एफएमसीजी होता है वैसे एफएमईजी होता है। जो ये इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाते हैं वो एफएमईजी सेक्टर में आती हैं वो कंपनियां। सो दिस इज द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वायर एंड cables, and the company's product line include electric fans, LED lighting, and the switches and switch gears under the Polycab brand. So uh, all these things company makes, और ये FMEG electric goods के sector में आती है, and this is a mid cap kind of company, yes of course, but the growth oriented company, yes, this company is slowly growing and growing, and when इसने हैवेल्स और हैवेल्स जैसी कंपनी का भी काफ़ी कुछ मार्केट कैप ईटअप कर लिया है. So Q4 result was very fantastic, and they have actually posted a very good net profit. I will discuss y on y. So let's discuss the results. So अगर profit देखें, number one, profit is in Q4 2023, it has come 428.4 crore, and which was in last year in the same quarter it was 325 crore. तो means 325 crore से 428 करोड़ के अराउंड नेट प्रॉफिट हो गया है, विच इज द डायरेक्ट जंप ऑफ 31.8, मीन्स अगर माने तो 32% का जंप है नेट प्रॉफिट में, और दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग. Actually it is not a small thing. And the revenue, if you see the revenue is the 4323.7 crore, and in the Q4 2023, and the same thing it was last year in Q4 it was 3970. So means y on y 8.9 8.9 का 8.9% का jump है. Now let's come to the EBITDA. Yes, EBITDA is in this Q4 2023 it is 609, means 609.6 crore EBITDA आया है, which was in last Q4 y on y it was 476 crore, means the 28% या 28.1% का jump है in EBITDA y on y. Yes. Now let's come to the margin. और margin company is maintaining the margin. काफी quarter से company is maintaining the margin, and this time it last year it was 12% in Q4 2022, but now this time in 2023 Q4 it has become 14.1%. इतनी इतनी beautifully they have increased their margin. uh, what should I say actually. तो 12 से 14.1% margin हो गया है, and margin is most important things in company to show their growth, and the increase is 210 bps in margin. So this is the overall company's Q4 रिजल्ट, और कंपनी ने CNBC आवाज और बाकी सारे एस्टिमेट भी बीट किए हुए हैं, और कंपनी हैज बीटन द एस्टिमेट ऑफ CNBC ऑफ 386 करोड़ के नेट प्रॉफिट का एस्टिमेट भी इसने बीट किया है, जो कि इसका आया है 428.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट. सो ओवरऑल रिजल्ट is very good. You can check the results in detail also.
If we look at the peers of electric goods manufacturers, so there is so many company you can see the peers, but polycab ka market cap is big, is actually largest market cap. तो पॉलीकैब का मार्केट कैप इज 51,580.63 करोड़, मीन्स ऑलमोस्ट 51,580 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, विच इज वी सी द प्राइस एंड अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, दैट इज 40.55, and this is actually, if I will say, this is overvalued. ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कंपनी होगी, अभी बहुत रन अप भी कर चुकी है. सो अभी थोड़ा इसका प्राइस अभी थोड़ा ऊंचे या हाई वैल्यूएशन पे, ऑफकोर्स इट इज इन अवेलेबल ऑन हाई वैल्यूएशन. सो you can wait for to cool it down. Now we'll come to the dividend yield. Dividend yield is okay, not very good. It is 0.41, yes, 0.41%, and the ROCE, return on capital employed, is 28.36. It is actually very very good ROCE from the company. That to equity almost debt free है, company is almost debt free, negligible debt है. ROE ROE is 20.86%. बहुत ही अच्छा ROC, बहुत ही अच्छा ROE, एंड EPS इज ऑल्सो गुड 84.80. प्लस शेयर कोई भी नहीं है, नो प्लस शेयर. एंड फ्री कैश फ्लो कंपनी का 969.11 है, मीन्स 969 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है. Overall, if you check the fundamental, it is very very good, and company is growing and growing. Now let's come to the technical level. So now let's discuss the technical levels and the buying level of the stock. If anybody wants to buy this stock, where should they buy? I will tell the level, but now currently it is not on buying level. बहुत दिनों से काफ़ी रन अप कर रहा है, काफ़ी अच्छा भाग रहा था, और इसने रिजल्ट भी पोस्ट किया, उसके बाद भी वो बहुत ही अच्छा रन अप किया हुआ है. सो 3400 पे तो पॉली कैब इज ट्रेडिंग एट 3440. लास्ट फ्राइडे, नहीं, लास्ट डे, आई थिंक यस्टरडे इट वाज इट, या नो नो, डे बिफोर यस्टरडे इट वाज ट्रेडिंग एट इवन अराउंड 3500 के पास भी ये जा चुका था. एंड 3500 के आसपास तो इसका अभी तुरंत का इमीडिएट टारगेट है 3520 या 3500. सो 3500 तो ये आ ही चुका है लगभग. सो अभी इस टारगेट को वी विल नॉट फोकस ऑन दिस 3500 टारगेट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट long term, only long term I am talking about the polycab, not short term, not कोई trading idea नहीं है. So long term के लिए, if you want to accumulate this stock, see from here, यहाँ से लेके यहाँ से इसने शुरुआत की, it is started running from here एंड देन अप 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 अप. एक जगह भी स्टॉक रुका नहीं है, बस थोड़े एक बार बस यहाँ पे आके इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया है, बट अगेन आफ्टर ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है. दिस स्टॉक इज जस्ट स्काई रॉकेटिंग. सो या 3500 तक ही पहुंच चुका है. सो नाउ विल टॉक अबाउट द बाइंग लेवल फॉर द पॉलीकैप फॉर द लॉन्ग टर्म. सो इफ इट मे, यस, ये ओवरबॉट हो चुका है ज़रूर. अब थोड़े दिनों में ज़रूर ये वापस फॉल करेगा, इट विल फॉल अगेन. सो इफ यू आर गेटिंग दिस स्टॉक समवेयर here, if you are in hurry to buy this stock, if you are getting this stock somewhere here 3200, yes, 3200 के आसपास, so you can start accumulating it here. But if it falling again to 3100, so you can also add here, add it at this level 3100. So आई गेस, आई एक्सपेक्ट कि इससे ज़्यादा नीचे ये नहीं गिरेगा, बट कभी फ्यूचर में अगर ये और गिरता है 3000 पे भी आ सकता है. इट कैन कम टू द 3000 ऑल्सो. सो 3000 इट्स रेयरेस्ट लेवल हो सकता है जो आ जाए, तो इट्स जैकपॉट. बट if it still it is coming to the 3100 to 3200,
So it is very good buying level for the polycab for long term. So buying level for the polycab for the long term can be 3100 to 3200, and if it's breaking 3100, it can come to the 3000, which is very good buying level for the polycab. So to know the more these kind of good fundamentally strong stock and their buying level, stay connected to the channels and like and share. To know the level of Asian Paint, click the right button. To know the level of the Tata Motor, click the left button and stay connected. Signing off.